अब हम आगे चलते हैं। ये एग्जांपल हो गया था, उसके बाद है जनरल केस। लेट अस नाउ कंसीडर द जनरल केस when there are n variables x1 x2 so on xn and m constant, m is less than n, the number of variables zyada. Let the NLPP be maximize or minimize z equal to f x1 x2 so on xn, subject to the constants gi x1 x2 so on xn is equal to ci and xi greater than or equal to 0. यहाँ पर इक्वालिटी कांस्टेंट है, I is varying from 1 to m and it is less than n. The constants can be reduced to hi x1 x2 so on xn is equal to 0 for I is equal to 1 to so on m, where this hi is gi minus ci. जैसे हम लोग पहले किए थे, by the transformation hi is equal to gi minus ci for all I. The problem can then be written in the matrix form as maximize or minimize z equal to fx, x belongs to Rn, subject to the constant hix is equal to 0 and x greater than or equal to 0. तो अब ये प्रॉब्लम हमारा हो गया, जनरल केस हो गया. To find the necessary conditions for a maximum or minimum of fx, a new function, the Lagrangian function Lx lambda, is formed by introducing m Lagrangian multipliers. पहले multiplier एक था क्योंकि एक constant था. Now there are m constants, so there will be m Lagrangian multipliers, lambda 1, lambda 2, so on lambda m. This function is defined by Lx lambda is equal to fx minus summation I equal to 1 to m lambda I hi x. This is your Lagrangian function. Assuming that L, F, and Hi are all differentiable partially with respect to x1, x2, so on xn, and lambda 1, lambda 2, so on lambda n. Now, these are necessary conditions for a maximum or minimum of fx are given as del x, del L by del xj is equal to 0, and this is del F by del xj minus summation I equal to 1 to m lambda I del Hix by del xj. इसको differentiate करना है with respect to xj, where j is equal to 1 to so on n, क्योंकि n variables हैं, and del L by del lambda is equal to minus hix, this is 0 for I equal to 1 to so on n, because there are m Lagrangian multipliers. These m plus n necessary conditions. Conditions कितने हो गए? ये n conditions हो गए. This is m. So these m plus n necessary conditions can be represented in the following abbreviated form. जैसे Lj is equal to fj minus summation I equal to 1 to m lambda I hij equal to 0, or fj is equal to summation I equal to 1 to m lambda I hij, j is equal to 1 to so on n, and L lambda I is equal to minus hi, this is 0, for I is equal to 0, I equal to 1 to so on n, where this fi is del f by del xj, hi is his, and hij is del hi by del xj. These necessary conditions also become sufficient for a maximum or minimum of the objective function if the objective function is concave or convex and the side constants are equality ones. यानी मैक्सिमम होगा कॉन्केव के लिए और मिनिमम हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए. अब उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग. ऑब्टेन द सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आपका है मैक्सिमाइज z is equal to x1 square plus 3x2 square plus 5x3 square subject to the constants x1 plus x2 plus 3x3 equal to 2 and 5x1 plus 2x2 plus x3 equal to 5, where x1, x2, x3 all are greater than 0. The non-linear function हो गया, this is linear, and they are equality constants. So this function, this problem is a non-linear programming problem. देखिए, here we have x equal to x1 x2 x3, fx is your x1 square plus 3x2 square plus 5x3 square. G1x is x1 plus x2 plus 3x3, and G2x is 5x1 plus 2x2 plus x3, and C1 is 2, C2 is 5. Now define hix as gix minus ci. हम लोग पहले कर रहे थे. For I equal to 1 to 2, we have the constants hix equal to 0 for I equal to 1. For necessary conditions for maximizing fx, we construct the Lagrangian function. Lagrangian function Lx lambda हमको बनाना पड़ेगा. So this Lx lambda will be
fx minus lambda1 h1x minus lambda2 h2x, where lambda is lambda1 and lambda2. lambda की दो वैल्यू है, lambda1 and lambda2. This is the following necessary condition. del L by del x1 अगर हम लोग करेंगे तो मिल जाएगा 2x1 minus lambda1 minus 5 lambda2 equal to 0. del L by del x2 6x2 minus lambda1 minus 2 lambda2 equal to 0. del L by del x3 10x3 minus 3 lambda1 minus lambda2 equal to 0. del L by del lambda1 minus x1 plus x2 plus 3x3 minus 2 equal to 0. And del L by del lambda2 minus 5x1 plus 2x2 plus x3 minus 5 equal to 0. तो ये सिंपली तुम्हें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x1, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x2, this is with respect to x3, this is with respect to lambda1, and this one last one is with respect to lambda2. So you will get these 5 equations. इन 5 इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको x1, x2, x3 और lambda1, lambda2 की वैल्यूज मिल जाएगी. और जब ये 5 वैल्यूज मिल गई, then we will get maximum value of z for the values of x1, x2 and x3. ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम में, कोई मुश्किल नहीं है. Remarks देखें. In some cases, it is not generally possible to solve the equation resulting from the set of necessary conditions explicitly for the values of x and lambda I. A convenient method in this case is to select successive numerical values of lambda I. Suppose ये आसानी से नहीं निकल रहा तो numerical values ले लेंगे successively and then solve the set of necessary conditions for x. This is repeated until for some values of lambda I the resulting x satisfies all the constants in equation form. यानी हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का यूज करेंगे कि सक्सेसिवली हम लोग निकालेंगे. एक रूट निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, और तब तक करेंगे जब तक कि जो रिजल्टिंग वैल्यू x की मिल रही है वो सभी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर देता. नेक्स्ट है सफिशिएंट कंडीशन for maximum or minimum of objective function. If the concavity or convexity of the objective function is not known, नहीं पता है, the method of Lagrangian multiplier can be utilized to determine a set of sufficient conditions for a maximum or minimum of the objective function. Let us consider the NLPP involving n variables and one constant. Maximize or minimize the equal f x in Rn subject to the constants hx0, x greater than equal to 0. Let the Lagrangian function be Lx lambda हो जाएगा fx minus lambda hx, and the necessary conditions for a stationary point to be maximum minimum क्या होगा? del L by del xj is equal to 0 means del f by del xj minus lambda del x by del xj equal to 0, and del L by del lambda is 2 minus hx equal to 0. There is varying from 1 to n. The value of lambda is obtained by यहाँ से lambda की वैल्यू क्या हो जाएगी? del f by del xj divided by del x by del xj, और j is equal to 1 to 1. The sufficient conditions for a maximum or minimum require the evaluation at each stationary point of n minus 1 principal minors of the determinant given below. आगे determinant दिया है, देखिए. This is your determinant delta n plus 1, this 0, del h by del x1, del h by del x2, and so on, del h by del xn. Similarly, del h by del x1, del 2f by del x1 square minus lambda del 2h by del x1 square, and so on. लास्ट में इसी तरह से लास्ट वन इज del h by del xn, del 2f by del xn del x1 minus lambda del 2h by del xn del x1, and last one is del 2f by del xn square minus lambda del 2h by del xn square. If delta 3 greater than 0, delta 4 less than 0, delta 5 greater than 0, the signs pattern being alternate, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, the stationary point is a local maximum. तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा वैल्यू डिटरमिनेंट की. If delta 3 less than 0, delta 4 less than 0, and so on, delta n plus 1 less than 0, तभी less than 0 है, the sign being always negative, the stationary point is the local minimum. तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लें कैसे करना है. Solve the non-linear programming problem. Minimize z equal to 2x1 square minus 24x1 plus 2x2 square minus 8x2 plus 2x3 square minus 12x3 plus 200.
नॉन लीनियर हो गया। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 plus x2 plus x3 is equal to 11, वन कांस्टेंट है x1 x2 x3 greater than equal to 0। तो लैग्रेंजियन फंक्शन सबसे पहले बनाएंगे L x1 x2 x3 and lambda, this is equal to 2x1 square minus 24x1 plus 2x2 square minus 8x2 plus 2x3 square minus 12x3 plus 200 minus lambda times x1 plus x2 plus x3 minus 11, this one। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस निकालेंगे नेसेसरी पॉइंट के लिए। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 जीरो कर देंगे, डेल बाई डेल एक्स 2 जीरो, डेल एल बाई डेल एक्स 3 जीरो एंड डेल बाई डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस वी गेट 4x1 minus 24 minus lambda इक्वल टू 0। देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हो जाएगा 4x1 minus 24 एंड माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू x2 करें तो 4x2 minus 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे तो 4x3 minus 12 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे तो माइनस x1 plus x2 plus x3 minus 11 इक्वल टू 0। 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स है x1 x2 x3 एंड लैम्डा। इनको सॉल्व करने से हमको मिलता है द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस यील्ड्स द स्टेशनरी पॉइंट। x0 मिल गया, x1 x2 x3 मींस 6 2 3 मिल गया, लैम्डा हो गया 0। द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्टेशनरी पॉइंट टू बी ए मिनिमम इज दैट द माइनस डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 बी बोथ नेगेटिव। नाउ वी हैव डेल्टा 3 निकालेंगे और डेल्टा 4 निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला दिस। इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का फार्मूला यूज करके डेल्टा 3 मतलब 3 रोज ले लेंगे और 3 कॉलम ले लेंगे, फर्स्ट 3 रोज एंड फर्स्ट 3 कॉलम। इसी तरह से डेल्टा 4 ले लेंगे तो उनका जब वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 3 तो ये आता है -8 और डेल्टा 4 आ जाता है -2। दोनों नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, एक मिनिमम हो गया। Which are both negative. Thus x0 is equal to 6 to 3 provides the solution to the NLP। तो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी तो पूछो मुझे।